Hello friends, in this video we are going to learn the technique of finding out the derivative of the parametric functions. Before we learn the technique how to differentiate the parametric functions, first of all let us define the parametric functions. Let x is function of t and y is another function of t. That is, let x is equal to phi of t and y is equal to psi of t. These are two functions in variable t. In such case, x and y are called as parametric functions or parametric equations and t is called as parameter. इन- यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? जब हमारे पास x और y दो वेरिएबल्स दे आर एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ अ सेम वेरिएबल t, तब हमारे पास जो दो इक्वेशंस बनती हैं दोज आर कॉल्ड एज पैरामीट्रिक इक्वेशंस और उनमें जो कॉमन वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड एज पैरामीटर. अब हम डिस्कस करेंगे कैसे इसका डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है पैरामीट्रिक इक्वेशंस. उसके लिए हमने सपोज किया कि x इज फंक्शन ऑफ t and y is function of t, that x is equal to phi of t and y is equal to psi of t. तो स्टेप वन में हम x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t बिकॉज x जो है दैट इज फंक्शन ऑफ t. उसी स्टेप में हम y का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. दैट मींस dx upon dt is phi dash t and dy upon dt is psi dash t, which is the derivative of function with respect to t. Step 2 में we'll make use of chain rule, and by chain rule dy by dx, we know that dy by dx is equal to dy by dt into dt upon dx, or dy by dx is equal to dy by dt whole divided by dx upon dt. dy by dt, as we have discussed earlier, it is psi of t, psi dash t, and dx upon dt is phi dash t. तो इससे आपके पास dy अपॉन dx आ जाएगा. चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और सीखते हैं कैसे dy by dx निकालना है जब हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स दैट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल. तो उसके लिए लेट्स हैव अ क्वेश्चन. फाइंड dy by dx in each of the following without eliminating the parameter. So the first part is x is equal to at square और y is equal to twice of at. हमें फाइंड करना dy by dx. x जो है वो t का फंक्शन है, y जो है t का फंक्शन है. हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t. मैं दोनों एक साथ ही कर रहा हूँ. तो dx अपॉन dt किसकी इक्वल हो जाएगा, d by dt ऑफ at स्क्वायर, और at स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ गया 2at a being constant. Similarly, dy by dt is equal to d by dt of 2at, a being constant, so its derivative is 2a. So by chain rule, dy upon dx is equal to dy by dt divided by dx upon dt. dy by dt हमने फाइंड किया था 2a और dx upon dt हमने फाइंड किया था 2at, which is equal to 1 upon t. तो फिर से देखिए, हमारे पास x was function of t, y was function of t. हमने दोनों को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t और जो उनका डेरिवेटिव आया उसके बाद चेन रूल अप्लाई किया. dy by dx is equal to dy by dt divided by dx upon dt. तो dy by dt का वैल्यू 2a, dx upon dt का वैल्यू 2at. उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास फाइनल आंसर. चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं. In second part, we are given that x is equal to a into cos t plus log of tan t upon 2, and y is equal to a sin t, और हमें फाइंड करना dy upon dx. तो इस क्वेश्चन में first of all we are given that x is equal to a cos t
plus log of tan t upon and y is equal to a sin t। अब यहाँ पर x और y दोनों ही t के फंक्शंस हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, जिससे हमारे पास dx अपॉन dt इसके इक्वल आ जाएगा a टाइम्स d बाई dt ऑफ cos t प्लस log ऑफ tan t अपॉन 2 और dy अपॉन dt किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू d by dt of a sin t। As we know that sin t का डेरिवेटिव जो होता है दैट इज cos t, तो dy अपॉन dt हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया a cos t, और इसको नहीं पे रिटेन करते चलते हैं dx अपॉन dt के डेरिवेटिव, तो a cos t की डिफरेंशिएशन माइनस sin t log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, लेकिन x के बदले क्या है यहाँ पर tan ऑफ t बाय 2, तो इसका डेरिवेटिव now dx upon dt is equal to a into minus sin t प्लस tan को इन टर्म्स ऑफ sin और cos लिखें तो वापस क्या आ जाएगा cos t by 2 अपॉन sin ऑफ t by 2, और हम जानते हैं tan थीटा का डेरिवेटिव जो होता है दैट इज secant स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर थीटा इज t by 2 into d by dt of t by 2। फर्दर dx upon dt is equal to a minus sin t plus cos t upon 2 divided by sin t upon 2 secant को in terms of cos लिखे that is cos square t by 2 और t by 2 की differentiation 1 by 2, so this is a minus sin t plus cos और cos cancel, हमारे पास क्या आ गया 1 upon 2 sin t by 2 into cos of t by, अगर आप देखें तो दिस इज 2 sin थीटा cos थीटा की फॉर्म में, जिसका सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्या आ जाएगा dx upon dt is equal to a minus sin t plus 1 upon sin of t। इनका जब आप एलसीएम लोगे तो इट इज माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन साइन ऑफ t। इसको आप कैसा लिख सकते हो, dx अपॉन dt is equal to a into cos square t divided by sin of t। तो ये हमारे पास dx अपॉन dt आया बाय चेन रूल, देखिए हमारा टारगेट dy by dx फाइंड करने का था। बाय चेन रूल dy upon dx is equal to dy by dt divided by dx upon dt, और dy by dt आपने क्या फाइंड किया था, a cos t, अब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा sin t upon a cos square t, dy upon dx this becomes cos और cos cancel, a और a cancel, sin t upon cos t which is equal to tan of t। ये हमारे पास फाइनल आंसर। Now next one, this is third part। इस बार x आपको दिया हुआ है a secant cube theta and y is equal to a tan cube theta। तो differentiate both sides with respect to theta, which gives you dx upon d theta
is equal to a into d by d theta of secant थीटा का होल क्यूब। इसी तरह से dy अपॉन डी थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, a इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा का होल क्यूब। तो dx अपॉन डी थीटा is equal to 3a into secant theta raised to power 3 minus 1 into d by d theta of secant theta. That means dx upon d theta is equal to 3a secant theta का डेरिवेटिव आता है secant theta into tan theta, and dy by d theta will be equal to 3a tan square theta into d by d theta of tan theta. So that means dy upon d theta is equal to 3a tan square theta into secant square. चलिए by chain rule dy upon dx is equal to dy by d theta divided by dx upon d theta, which is equal to 3a tan square theta into secant square theta divided by 3a secant square theta into secant theta tan theta. तो कुछ टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे. So you can see 3a cancel, secant square cancel, tan और tan cancel. तो वापस dy by dx किसके इक्वल हुआ, tan थीटा अपॉन secant थीटा. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए tan और secant को हम sin और cos की फॉर्म में लिख रहे हैं. tan थीटा है sin थीटा बाय cos थीटा और secant थीटा इज 1 बाय cos थीटा, जिसका सिंप्लीफिकेशन क्या आ जाएगा, hence dy upon dx is equal to cos of theta. Answer. Our next problem. We given that x is equal to a cos theta is theta sin theta, and y is equal to a sin theta minus theta cos theta. So in solution given x is equal to a into cos of theta plus theta sin of theta, and y is equal to a sin of theta minus theta cos. And differentiating both sides with respect to theta, because parameter is theta, so dx upon d theta is equal आएगा. This is a into d by d theta of cos theta plus theta sin theta, which gives you a into cos theta का differentiation minus sin theta. अब यहाँ पर दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा. So this first function into derivative of second function plus second function into derivative of first function. So it was having product of two terms. So making use of product rule, the first function into d by d theta of second function plus second function
into derivative of first function, which is equal to dx upon d theta is equal to a minus sine theta plus sine theta का derivative cos theta plus sine theta or theta differentiation with respect to theta is 1. So sine theta and sine theta will be cancelled out. That means dx upon d theta is nothing but a theta cos. So ये आ गया. चलते इसी तरह से dy upon d theta निकालते हैं. तो dy upon d theta is equal to a into d by d theta of sine of theta minus theta cos, which equals to a sin theta की differentiation cos theta minus 2 times की multiplication of the current rule first function into derivative of second function plus second function into derivative of first function. So dy upon d theta, this will be equal to a cos theta minus theta into minus sin theta cos theta का derivative minus sin theta plus theta की differentiation 1. तो इंटरनल ब्रैकेट को ओपन करते तो dy अपॉन d theta will be equal to a cos theta minus minus plus theta sin theta minus into plus minus cos theta कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास dy अपॉन d theta किसके इक्वल हो जाएगा a theta sin of theta. Now by chain rule dy upon dx is equal to dy by d theta divided by dx upon d theta, which is a theta sin theta upon a theta cos theta. तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पास फाइनल आंसर विल बी tan of theta. समटाइम्स पैरामीट्रिक के क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको नहीं दिए जाते हैं, आपको उसके बदले क्या आ जाता है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 plus x square with respect to tan inverse of x. Means आपको पैरामीट्रिक के क्वेश्चन नहीं दिए गए but you are asked to differentiate one function with respect to another. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आप देखेंगे कि बिल्कुल वैसे ही जैसे भी हम कर रहे थे. तो मैं अज्यूम करूंगा y is equal to sin inverse of 2x upon 1 plus x square and t is equal to tan inverse of x. यानी कि मेरे को किसको डिफरेंशिएट करना था, इसको किसके रिस्पेक्ट से, इसके रिस्पेक्ट से. मींस आई हैव टू डिफरेंशिएट y with respect to t and differentiation of y with respect to t is nothing but dy by dt, where y and t they are the function of x, so they are representing parametric equation and this time parameter is x. Before we differentiate we have to first simplify by formula of inverse trigonometry. We know that sin inverse of 2x upon 1 plus x square is equal to 2 tan inverse of x and t is equal to tan inverse of x. Now differentiate both sides with respect to x, which gives you dy upon dx is equal to 2 times d by dx of tan inverse of x and simultaneously dt upon dx is equal to dt upon dx is equal to d by dx of tan inverse of x. Tan inverse x का differentiation 1 upon 1 plus x square और dt upon dx is equal to 1 upon 1 plus x square. तो ये मेरे पास एक्सप्रेशंस आ गए. अब चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर. बाय चेन रूल dy upon dt
dy upon dt is equal to dy by dx divided by dt upon dx, which is 2 upon 1 plus x square divided by 1 upon 1 plus x square, which equals to 2, and hence it is the answer. Let's take one more question based on this one. Suppose this time you have to differentiate x raised to power x, differentiate x raised to power x with respect to x log of x. Solution: let y is equal to x raised to power x and t is equal to x log of x. So as per given condition, we have to differentiate y with respect to t. But if you look at y, this is x raised to power x. So for such function, whenever we have function raised to power function, we make use of logarithm. So apply log to base c. That gives you log y is equal to log of x raised to power x, which is equal to x log of x. Now we are differentiating both sides with respect to x. Differentiate both sides with respect to x. This gives you d by dx of log of y is equal to d by dx of x log of x. Log y का differentiation 1 by y into dy by dx. Right hand side का product rule x into d by dx of log x plus log of x into dx upon dx. That gives you dy upon dx is equal to y into log of x का differentiation 1 by x plus log of x का differentiation 1. That means dy upon dx is equal to x raised to power x into 1 plus log of x. ये हमारे पास आ गया dy by dx. अब d जो था हमारे पास ये टर्म थी, तो हम डायरेक्टली बिना एक्सप्लेन किए मैं इसको कर रहा हूँ dt upon dx is equal to d by dx of x log of x, which is equal to x into d by dx of log x plus log x into dx upon dx, which is equal to 1 plus log of x. This is dt upon dx. Now by chain rule, dy upon dt is equal to dy upon dx divided by so where we were, dy by dx was equal to y into x into 1 by x plus log of x. Simplifies to dy upon dx is equal to x raised to power x into 1 plus log of x. और dt upon dx हमारे पास आया था, dt upon dx हमारे पास आया था 1 plus log of x. So using chain rule, by chain rule, dy upon dt is equal to dy upon dx divided by dt upon dx, which is equal to x raised to power x into 1 plus log of x divided by dt upon dx was 1 plus log of x, hence dy upon dx is equal to x raised to power x. That means differentiation of x raised to power x with respect to x log of x is x raised to power x. So I'm giving you one question for assignment. You can try this question. Question is differentiate
tan inverse of 1 minus x upon 1 plus x with respect to स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि आप इसको y लीजिए, इसको t लीजिए, dy अपॉन dx फाइंड कीजिए और dt अपॉन dx फाइंड कीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन है, तो कुछ कंसेप्ट अप्लाई करके सिंप्लीफाई करने के बाद इसको ऐसा कीजिएगा। सो ट्राई दिस क्वेश्चन by keeping our video up to this point. Till the next video, keep practicing differentiation so that you become perfect in differentiation. Thank you.